Hello guys, hello everyone. I hope all of you doing well and fine. So guys, I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So guys, I am back with the third video of IOQM 2021-22. So guys, we are solving previous year questions. So far, we have covered 2 marker questions. In this particular year, there were only 12 questions, right, due to COVID. So today we are going to see the third question, which was a 3 marker. Okay, it was quite an easy one, very, very easy. So hardly any thought to be given in this question. Rather, guys, free के number थे. ठीक है, if this type of question comes, it is very, very easy to do, right? Let's see the question, guys. So let's read the question, guys. It says, consider the set tau of all triangles whose sides are distinct prime numbers. तो guys, ऐसा triangle जिसकी sides क्या है, सारी की सारी distinct prime numbers हैं, which are also in AP arithmetic progression में है, right? So they are in arithmetic progression as well as they are distinct primes. Okay. Okay. All right. Let's see. Now let delta belonging to tau, मतलब इस सेट में से इन तरह के ट्राइंगल्स में से हमें कैसा ट्राइंगल चाहिए? Delta is a triangle with the least perimeter. The interesting part is least perimeter. तो guys, in this set of triangles, जिसकी सारी sides क्या हैं? Distinct prime numbers होने चाहिए. So what is the point here? So guys, अगर आपके पास एक triangle है, first of all, okay, just let me, all right, anyways, just a second. Okay, so guys, अगर एक हमारे पास triangle है जिसकी sides हैं, let's say A, B, C, just for the time being, let's understand. Let's say the sides are A, B, C. So one thing is A, B, C must be distinct prime numbers. एक तो scalene triangle तो होगा ही ना. The triangle must be scalene triangle since these the sides are 3 distinct prime numbers, and also they are in AP. AP में भी होना जरूरी है, right? The 3 numbers are in AP. तो गाइज हमारा डेल्टा जो ट्राइंगल है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो ट्राइंगल क्या है? उसका लीस्ट पेरीमीटर होना चाहिए. तो गाइज इसका मतलब हमें ऐसे स्मॉलेस्ट एबीसी ढूंढने हैं. वी हैव टू फाइंड सच स्मॉलेस्ट साइड्स ए बी एंड सी नंबर्स. मतलब अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, छोटे से छोटे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं. ठीक है, बिकॉज तभी तो सम भी तो लीस्ट होगा. सो दैट दे आर इन एपी एज वेल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हो और प्राइम नंबर्स भी हो. सो गाइज इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू स्टार्ट विथ 2, if you try to consider 2, smallest number 2, तो guys अगर आप कोई भी प्राइम लोगे इसके बाद का, that is going to be odd, right? First of all, let's understand why 2 cannot be included. अगर आपने 2 लिया, उसके बाद अगर आप कोई भी प्राइम नंबर लेते हो guys, that is going to be odd. For example, आपने 3 लिया, although 3 लोगे तो next 4 होना पड़ेगा, which is not possible. 4 is not a prime, so 3 तो नहीं ले सकते. तो guys अगर हमने next number 5 लिया, देखो why we cannot do this? Because guys, difference between the number 2 and the next prime number is going to be odd. और अगर आपने 5 में फिर वो नंबर odd ऐड कर दिया, the next number is going to be even then, है ना? तो 2 को तो आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते. अंडरस्टूड द पॉइंट? 2 को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? बिकॉज देन द नेक्स्ट थर्ड साइड और द लार्जेस्ट साइड विल हैव टू बी इवन ओनली, है ना? तो हो नहीं सकता ऐसा. सो दैट कैन नॉट हैपन. 2 कैन नॉट बी इंक्लूडेड, राइट? 2 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते हो. So that means guys, let's try with the smallest number as 3. अगर हम smallest number 3 लेके चलते हैं, so the next prime, if we try to keep the perimeter to be least, तो हमें तो next immediate prime number देखना चाहिए. So that would be 5. So accordingly अगर guys 3 है, 5 है, तो next number should be 7. So that's interestingly guys, हमें बहुत easily वो number मिल जाएंगे. So 3, 5 and 7 must satisfy, right? ये तो सही है. This will satisfy, this is satisfying the criteria. Smallest हमने लिए हैं और distinct primes भी हैं और ये AP में भी हैं. So guys, that means the triangle that we have, let me replace the sides. Okay, क्या रहने देते हैं. So this is 3, let's say, then this is 5 and the largest one is 7. Understood, right? तो हमने identify तो कर लिया easily कि sides क्या होने वाली हैं triangle की, right? Now the question is guys, if A degree is the largest angle of the triangle, तो guys we know that the largest side के opposite वाला जो angle होता है, that is the largest, or the you can say the angle opposite to the largest side is the largest, है ना? तो guys ये वाला जो angle होने वाला है, that is A degree. Okay, so we can remove this notation ABC, right? So the angle A degree is this, right? And L क्या है guys? Perimeter है. तो L तो हम पहले ही find करके रख सकते हैं. What is L going to be? That is 3 plus 5 plus 7, right?
So guys, that means the value of L is 15, right? L तो पहले ही निकाल के रख सकते हैं. Now coming to the value of A, एंगल कैसे ढूंढें? So guys, this is very much easy, है ना? ये तो cosine rule हम use कर सकते हैं. The three sides of the triangle are given to you. That means you should be able to find any angle of the triangle, right? Using cosine rule. So let's apply guys. Cosine rule apply करते हैं इसमें. Cos of A degree would be in this triangle guys, क्या होगा cosine rule में? That is the sides containing the angle, उनके squares का sum, meaning this is equal to 3 square plus 5 square minus side opposite to the angle, उसका square divided by 2 times 3 times 5, right? That is the formula. So let's see क्या value आती है guys. So 3 square is 9 plus 25 34, right? 34 minus 7 square 49, so that is going to be minus 15. और guys नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 into 3 into 5. So 5 and 3 will cancel 15. तो बच्चों cos A डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2, right? तो guys for what value of A you get cosine as -half, so that gives us A degree as 120 degrees. तो A की वैल्यू गाइस कितनी आ रही है? 120, है ना? A की वैल्यू तो 120 होनी पड़ेगी, राइट? सो गाइस दैट मींस नाउ वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ A by L, राइट? फाइनली तो जस्ट वैल्यू पुटिंग है. तो गाइस A कितना है? 120 अपॉन L वैल्यू इज 15, राइट? सो लेट्स सी. तो गाइस 15 विल कैंसिल दिस फॉर 8, राइट? सो बच्चों फाइनल आंसर for this question would be 8, है ना? So इस question का final answer that would mark would be 8. All right, is this thing clear? So quite an easy one, right? तो guys यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस logic से अगर आप जानना शुरू करोगे, you'll find the smallest numbers, right? That is very easy to find, 3, 5 and 7. So काफी easy था, values easily मिल जाएंगी आपको, right? And then finding the angle and the perimeter is an easy game, है ना? So all right guys, I hope you guys understood this question, okay? So that's it guys, we'll see you in the next video. Till then keep practicing and all the best guys, and do like, share and subscribe our video with the relevant friends, right? Okay guys, जो भी आपको अगर आपके friends prepare कर रहे हैं IUCAM के लिए, so do tell them about us as well. Okay guys, thank you guys, we'll see you in the next video. Okay, bye bye guys, take care, all the best.